Yeah. Good evening, everyone. Hello, my name is Aindi Chakravarti. I'm here on behalf of Let's Tute English Masterji. I welcome you here. आप मुझे बताएंगे यहाँ पे मैं क्यों हूँ? Yes, I'm here to help you. आपको मदद करने के लिए जहाँ पे आप अपना पहला कदम उठाएंगे इंग्लिश बोलने के लिए. क्या आप मुझे बताएंगे इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश जानने में क्या फर्क है? कोई मुझे बताएगा प्लीज? Anyone who can tell me? No one? ओके सो जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ सो मुझे आप बताएंगे इंग्लिश बोलने के लिए ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये मैं क्यों बोल पा रही हूँ? क्या मुझे इंग्लिश की समझ है या मुझे समझ के भी बोलने की आदत है? सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू टेल यू इज इंग्लिश बोलने के लिए मुझे सिर्फ ना ही वर्ड्स ना ही वोकैबुलरी बट मुझे टेंस यानी काल का भी हमें पहना व्हाट डू आई से हमें जानकारी होनी चाहिए. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंस? व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेंस? अगर मैं आपसे पूछूं, कैन यू टेल मी विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेंस दैट नॉर्मली इज यूज्ड व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश? Present, past, future. Rightly said, Natasha. Okay, yes. Past tense, present tense, and future tense. Simple future tense, simple past tense, simple present tense. Simple present tense यानी सामान्य वर्तमान काल. Simple past tense यानी सामान्य भूतकाल, and simple future tense means भविष्य काल. But my friends here, I would like to tell you कि सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ, जो पहला कदम है, I will be starting with simple present tense यानी कि सामान्य काल. अगर आपसे पूछूं कि सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, can anyone tell me what you understand by simple present tense? Yes, anyone who can tell me what is simple present tense? I'm going to school. Okay, anyone else? Anyone who can tell me what is I'm going to school? I can see Natasha replying me here. I'm going to office. Anurag says I'm going to office. Okay. Okay. इसका मतलब ये आप लोग बोलना चाह रहे हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या जा रही हूँ, राइट? बट ये प्रेजेंट टेंस नहीं है. माइंड दैट दिस इज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, इसका मतलब है 4:07 पे मैं स्कूल जा रही हूँ. ये मेरा वर्तमान काल, ये मेरा प्रेजेंट टेंस नहीं है. प्रेजेंट टेंस वो होता है जो मैं हमेशा करती हूँ, जो हमेशा होता है, जो कभी कभार होता है, जो कभी नहीं होता है. सो आई मीन टू से एक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन एंड ऑफ एवरी डे, समटाइम्स, ऑफन, कभी नहीं, that is never, etc. So I am going to office and I am going to school are not simple present tense. But if I have to frame, अगर मुझे frame करना है, so I will say I go to office every day या I go to school in the morning. So this is simple present tense. Now, present tense is something, that's what I said, Anurag. Present tense is something that takes place on and off on a regular basis, sometimes, often, always, never, etc. So this is simple present tense, mind that. ओके बिकॉज ज्यादातर मुझे ऐसे मिला है जवाब, आप लोग ने जैसे जवाब दिया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब आई एम गोइंग टू ऑफिस, जो हो रहा है, जो चल रहा है, बट इट इज नॉट सो. प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है जो होता है, जो मैं करता हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मैं खाता हूँ, जो मैं खाती हूँ, एक्सेट्रा. करेक्ट? सो अभी क्या आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी दो तरीके से बनते हैं? अगर पता है तो प्लीज बताइए, अगर नहीं पता है तो भी बताइए. हाय श्रेया, वेलकम. यस, आई आस्क्ड यू ऑल अ क्वेश्चन. कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस दो तरीके से बनते हैं? कंफ्यूज्ड? ओके. Anyone else? Shreya, do you have any answer for this? Anurag? Okay, fine. So simple present tense दो प्रकार के बनते हैं. Two types of simple present tense. Before I go ahead with two types of simple present tense, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर एक टेंस का, whether it's simple present, simple past या simple future, हर एक टेंस का अपना अपना एक सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसके मदद से हम इंग्लिश बोल पाते हैं या जिसके मदद से हम एक पर्टिकुलर टेंस में सेंटेंस बना पाते हैं. सो उसी तरह अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट टेंस
के verbs हैं am, am, is, are. So these are the helping verbs of simple present tense. और हर एक present tense का एक positive और एक negative होता है. am not, is not, are not. तो जिन सेंटेंस में ये होते हैं हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये वाक्य जो हम बनाते हैं या बना रहे हैं इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि अगर ऐसा है तो मैं आई एम गोइंग टू ऑफिस में तो मैंने आई एम लगाया तो फिर सेंटेंस क्यों नहीं बन रहा है, प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं है. करेक्ट. सो द थिंग इज प्रेजेंट टेंस दो प्रकार के बनते हैं. एक जहाँ पे मैं हेल्पिंग लगाती हूँ वहां पे वर्ब, क्रिया या एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गो, डांस, सिंग, ईट एक्सेट्रा. और दूसरा जहां पे मैं एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स लगाती हूँ या क्रिया लगाती हूँ, ईट, डांस, सिंग, टॉक एक्सेट्रा, वहां पे मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाती हूँ. सो दिस इज द most important point you have to remember while you frame sentences in simple present tense. Again मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रिया am is are लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे हम क्रिया या एक्शन नहीं लगाते हैं. और जिन सेंटेंस में हम क्रिया या वर्ब ऐड करते हैं वहां पे हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं करते हैं. Am I clear? Before I go ahead, do you have any questions? Please ask. Yes, any questions? Hi, who is this? Movie freak. Hi, hello, good evening. Okay, any other questions you have before I go ahead? Okay, so ये जो मैंने आपको बताया कि am is are से हम sentence बनाते हैं, तो I am going to share with you a PPT wherein you'll come to know कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ. ठीक है, पहले मैं आपको शेयर करती हूँ screen and then you can see that. Okay. So यहाँ पे मैंने कुछ sentences बनाए हैं. I hope you can see that. Okay. The first one आप लोग को लग रहा होगा ये subject, helping verb, object होता क्या है, right? तो subject मतलब जहाँ पे जो इंसान वो कार्य करता है या कर रही है या करेगी, whatever. So those are subject in Hindi which is called as कर्ता. Helping verbs are सहायक क्रिया. An object or a predicate are those part of the sentence जो sentence को पूरा करता है और उसको एक मतलब देता है. सो इन दिस केस जब मैं am is are से सेंटेंस बना रही हूँ, मुझे ये बात याद रखना है कि इन सेंटेंस में सिर्फ 3 वर्ड्स आएंगे, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. तो अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हो तो मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं जैसे आई एम या एम नॉट अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ही, शी, इट, इज और इज नॉट एन इंट्रोवर्ट और अ डॉग, we, you, they are or are not the founders or founder of this organization. तो क्या मुझे कोई बताएगा इन सेंटेंसेस का मतलब क्या बताता है मुझे अमेज़ा? इन सेंटेंसेस से आपको क्या पता चल रहा है कि मैंने इन तरह के सेंटेंसेस से व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? कैन यू प्लीज टेल मी दैट? ओके, एक्शन इज कंटिन्यूअस. नताशा यहाँ पे आपको कहाँ एक्शन दिख रहा है? यहाँ पे तो कोई एक्शन है ही नहीं. यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे एक्शन यानी वर्ब यानी क्रिया तो है ही नहीं. मैंने यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के सेंटेंस बनाया. तो मैं आपको बता दूं, ओके, तो मैं यहाँ पे बता दूं एक चीज कि जब मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं एम इज आर के साथ, बिफोर आई गो हेड, क्या आप मुझे बताओगे ये जो आर नॉट है, ओके, आर नॉट का हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? ज्यादातर हम प्रोनाउंसिएशन आर नॉट का करते हैं आरंट. Correct? I think most of you do or most of us do it. Aren't is not the right pronunciation. The right pronunciation is aren't. Okay? And coming back to am not. There are certain times you may come across, आपको कान में आएंगे आवाज जैसे ain't. So that is also equivalent to am not. Am not और ain't का मतलब एक बराबर ही होता है. So again I repeat, am not के जगह अगर आप ain't बोलोगे तो भी चलेगा और are not के जगह aren't नहीं, आज के बाद से the pronunciation would be aren't. Clear? तो अगर मैंने आपको यहाँ पे 5 स्लाइड्स दिखाए, सॉरी द स्लाइड्स व्हिच आई एम शोइंग यू हियर राइट नाउ, मुझे 3 प्रकार के मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं. द फर्स्ट वन इज आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. अगेन आई विल नॉट रिपीट द सेम. तो यहाँ पे क्लियरली स्पीकिंग आई विल टेल यू द 3 or 5 types of sentences that you can frame using am is are. First, introduction. For example, I am Indri Chakravarti. Yeah, for example, I'll say she is Natasha.
or I will say he is Anurag. So these are the introductions which I'm doing. Second comes my profession. I am a spoken English trainer. आप बोलोगे I am a student. कोई बोलेगा she is a homemaker. Anything, any kind of profession का जब हम introduction देते हैं, I use am is are. Third, characteristics, विशेषता. किसी की तारीफ करनी है present tense में. She is beautiful. He is smart. They are tall. This third. Fourth comes relationship. She is my friend. He is my father. They are my colleagues. Fifth and the last is location. लोकेशन मतलब ये नहीं कि मैं इस जगह पे रहता हूँ या रह रहा हूँ, बट मैं इस जगह पे हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन मुंबई, शी इज इन द कॉलेज, दे आर इन द प्लेग्राउंड. सो ये सब सेंटेंसेस हम इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं यूजिंग एम इज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Am I clear with this? Before I go ahead, please be free to ask any questions if you have. Okay. Yeah, which question? I asked you the question, Shreya. The question I asked you is, okay, can you please repeat? Okay. The question I asked you is, am I clear with whatever I've asked you? The question, what is the question that you want? How to use plural words in present tense? Okay, that will come in the when I frame sentences with verbs, Natasha. In this case, there won't be any plural. You can say they are cricketers, wherein it's a plural word, wherein I'm talking about the profession, it's more than one. They are my friends. We are homemakers. So whenever it's a group minimum of two people, that time you can frame it in plural. So they are my friends. We are colleagues, etc. Okay. Hello, Kaustubh. Okay. ओके, आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा है, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको हमारे कोर्सेज़ के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे आपको हम स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के बारे में हम आपको फ्री कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑल्सो वी प्रोवाइड बुक्स. So please be free to log in and see it through our website. Okay, thank you. So any questions before I go ahead? No questions? So can anyone of you frame the sentences using this concept in mind? Kaustubh, Shreya. It's free course. Yes, it's a free course. Courses are all free. Okay. Gloria. Gloria, is the concept clear to you? Am is our concept using present tense, wherein you just use helping verbs to frame 5 sentences. Again, I repeat: introduction, relation, characteristics, location, and profession. Okay. Kaustubh, right now I'm doing present tense, but in order to help you to understand what are plural words in past tense, the thing is, when you frame sentences in simple past tense, we use the second form of verb. Like in English, there are 3 forms of verb: V1 present tense, V2 past tense, and V3 is the perfect tense. So right now I'm going ahead with the present tense form. So right now I'm going to concentrate on the V1, but in the coming sessions or wherever, I will be sure to help you with the query of plural words or whatever is to be framed using the simple past tense. But in simple past tense, so just to give you an idea, simple past tense सिर्फ V2 यानी second form of verb से हम sentence बनाते हैं. Okay, Shreya. Okay, you're in Hyderabad. You're a student. Okay. Thank you, Kaustubh, for understanding. Yes, Shreya. Do you have any questions? Shreya, you're a student. Okay. Yes, can you just type in, I'm in Hyderabad. Okay, this is a sentence. Have you framed, Shreya? Is this a sentence or you're giving me an information? If you have framed a sentence, this is correctly framed. I am a student is also perfect, Shreya. Anyone else? Gloria, Kaustubh, Simran. Hello, Simran. Yes? I would request you all to put down some questions or some sentences that you have understood with the explanations that I have done right now. Sentence. Okay, great, Shreya. That's the right sentence. Perfectly said. Yes, who else? I'm a writer. Very good. So, writer, Natasha, that describes your profession. Very good. Someone in negative? Can someone frame in negative sentence?
Anyone who can frame some negative sentences? Hello, Neelam. Yes, anyone who can frame negative? Some negative sentences, lots of positive. He is tall, that's right. Yes, that's a characteristics. Okay, what else? I'm not a shopaholic. Very good. Good. That is also characteristics. Yeah. Great. And I hope you all have understood the pronunciation of are not, which is aren't, and am not can also be called as ain't. Okay. Fine. Right. So now I'm going ahead with the second part of simple present tense. Okay, just hold on. Okay. Now when I go for the second part or the second type of simple present tense, like मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस दो प्रकार के बनते हैं. एक जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है जहां पे हम सिर्फ okay examples can, like for example, see, you can also say they are cricketers, or you can say he is Rohit Sharma, wherein I'm introducing Rohit Sharma. He is a cricketer. I'm talking about his profession, and I can also say he is the captain of the Indian cricket team. So herein I'm describing his profession again, right? So they are my colleagues. They are from Mumbai. So herein I'm introducing my colleagues, and that is relationship, and they are from Mumbai, wherein I'm talking about their location. Right? I am Ainri Chakravarti. I am a spoken English trainer. So this is my introduction along with the introduction of my profession. Yes, Natasha, any more questions? I'm not short, correct? So in this case, Shreya, instead of saying I am not short, you can also very well say I ain't short. That is also perfectly said. Okay. Anything else? Kaustup, can you give me some examples, please? Yes. Fine. So now I go to the second part of simple present tense, wherein I'm going to frame sentences the second way. जहां पे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में एक प्रकार का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से सेंटेंस बनाए. अभी मैं दूसरे में जा रही हूँ, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कहां से हम कैसे किस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस वर्ब या क्रिया से सेंटेंस बनाते हैं. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रख okay. वहां पे हमारे एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं, राइट? सो बिफोर आई स्टार्ट माई एक्सप्लेनेशन, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू ऑल विच विल मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, आई होप इट इज क्लियर, यू ऑल कैन सी दिस. यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग वर्ब्स. वर्ब्स यानी एक्शन. तो यहाँ पे अभी सेंटेंस बनाने का तरीका बदल गया है. यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद जो मैंने वर्ब वन लिखा है वो मतलब होता है वर्ब यानी क्रिया. इंग्लिश में 3 प्रकार के वर्ब्स होते हैं जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. फर्स्ट वर्ब वन विच इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, verb 2 which is used in past tense, and verb 3 which is used in perfect tense. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने verb 1 का इस्तेमाल किया हुआ है. सो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, कि यहाँ पे मैंने वर्ब जो यूज किया है वो है लाइक. तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नो एस. यहाँ पे मैंने ही शी इट के साथ मैंने यस एस लगाया हुआ है, एंड वी यू दे के साथ अगेन नो एस लगाया हुआ है. इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं वर्ब के इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाती हूँ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, मुझे ये ध्यान रखना है कि जब मैं ही शी इट के साथ सेंटेंस बनाती हूँ मुझे वर्ब के पीछे एस लिखना जरूरी बनता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सेंटेंस बोला आई लव टू ईट आइसक्रीम, I cannot frame the sentence he loved to eat ice cream. No, this is a wrong sentence. यहाँ पे आएगा he loves to eat ice cream. फिर से अगेन we you they के बाद भी बात करूँ तो अगेन it is we you they love to eat ice cream. So ये बात हमेशा याद रखना आप सब कि जब भी आप he she से सेंटेंस बनाते हो in simple present tense using a verb,
please add the letter S behind the verb to give it a proper meaning. You cannot frame sentences in simple present tense using he, she, it without adding S behind the verb. Verb के पीछे अगर आपने S नहीं add किया तो वो automatically गलत हो जाएगा सुनने में भी और बोलने में भी. Correct? So, before I go ahead with some more thing, can someone give me example of all this? कोई वर्ब के साथ सेंटेंस बना के बताओगे मुझे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड जहां पे मुझे एस की जरूरत पड़ेगी सेंटेंस बनाने में. नताशा, व्हाट डू यू मीन बाय गलत कैसे होगा? No. See, Shreya, the question you have asked me is V4 for continuous and V5 for S or ES. No, this is not the right thing. I'll come to the S or the ES forms, but V4 is not used for continuous, and this is a misconception. Wherein you add V1 के पीछे अगर आपने ing लगा दिया, that becomes continuous tense. For example, liking, dancing, talking, singing, etc. तो यहाँ पे V4 बोल के कुछ नहीं होता है. Yes. Okay. Okay, just hold on. Okay. So right now, some sentences. Okay. Shreya, is it clear? Please do live sessions every Saturday. Very useful live session. Thank you, Kaustubh. Okay, Shreya, is it clear? She loves to eat cake. Yes, correct. Okay. Some more. So am I clear with that, Shreya, when I told you that V4 for continuous tense and V5? Okay, great. Yeah. Yes, some more examples. Anything else? So हमेशा याद रखना कि whenever you all are framing sentences with he, she, it, government itself is a it category. It comes in the it category, Ms. Ganguly. Yes, he procrastinates a lot. He procrastinates a lot is a correct sentence, but still you have to be more specific, Natasha. What does he procrastinate? So he procrastinates his work or he procrastinates to take his decision. Hello, Rituja. Ram plays cricket, correct? So remember, Ms. Ganguly, when you're using government, government is a it category. So automatically with the verb, you have to put S. Yes, Neelam, please go ahead. Neelam, you have a question. Most welcome, Ms. Ganguly. Yes, Neelam, waiting for your question. Anish, thank you, Anish. He listens to the lecture. Actually, see, in this case, Ms. Ganguly listens to the lecture is correct, but listen automatically comes when it is related to something which is related to music or hearing it from the third person. He is attentive to the lecture, or you can say he hears the lecture, attentively. Listen, try to avoid this word listen for lecture. Yes, correct, Ashwin. Sham likes to play cricket, yes. Yes, Neelam, what's your question? But Ms. Ganguly, you can go ahead with it. There's no doubt about it. There's nothing wrong in it, but still I would advise you to not to use that. Okay. Adnan loves to play football. Perfect, Kaustubh. Yes. Attention to the lecture. He does not pay attention. He's attentive to the lecture, Natasha. You cannot pay attention to the lecture. You have to be attentive while the lecture is on. Yes. Any more questions? Any queries? Anything? Framing of sentences? Okay. Any doubts or should I go ahead? Any questions? Okay.
Do you have any questions or should I go ahead? Fine. Right, Kasu, correct. Ajay likes to watch movies. Yeah, great. Fine. So now I go ahead. There are certain verbs which ends with, before I start, let me share the screen with you. I'll just hold on. Okay, here it is. There are certain verbs which ends with ch, sh, o, double s, single s, and x. For example, wherein I have written teach, push, go, pass, focus, fix, etc., and many more. So you all have to remember that whenever such kind of verbs you come across and you have to use them, अगर आपको इनका इस्तेमाल करना है simple present tense में, she, she, it के साथ आपको verb के पीछे es लगाना पड़ेगा. Not single s but es. For example, teach बन जाएगा teaches, catch बन जाएगा catches, push बन जाएगा pushes, pushes, brush बन जाएगा brushes, वो दिन में 2 बार ब्रश करता है, he brushes twice a day. She teaches history in the school. He goes to school in the morning. He discusses the matter with his parents. And she mixes the spices in the mixture. So whenever आप जब भी ch, sh, o, double s, single s या x से ending होने वाले verb से आप sentence बनाते हो in simple present tense, आपको ये हमेशा याद रखना है कि he, she, it के साथ जब आप इन words का इस्तेमाल करते हो, you have to add directly es behind the verb. उस वक्त s नहीं चलता है. Am I clear with this? Okay, so for example, like I give you some examples. She teaches me English. I teach her English. When I'm framing sentences with I, with teach, वो सिर्फ teach आएगा. I teach him English. She teaches me English. They teach me English. So यहाँ पे हमेशा याद रखना ch, sh, single o, double s, single s या x से words end होते हैं जो verb है उनके पीछे हम es लगाते हैं. Clear? Questions, doubts, anything? Please be free to ask. Often fumble while speaking. How can okay, Neelam, you of this thing you have to know. Why do you fumble? Is it because you lack confidence, or is it because you get conscious in front of people who are listening to you, or is it because you think that मुझ पे लोग हंसेंगे अगर मैंने मुंह खोला तो? ये 3 अक्सर होते हैं जहाँ पे आप बोलते हो कि मैं फंबल करती हूँ, right? Thank you, Ms. Ganguly. Yeah. So I often fumble while speaking. So how can I improve? This is your question. Improvement के बहुत से तरीके हैं नीलम. The first and the foremost is mirror practice. आप आईने के सामने खड़े हो जाओ. आईने के सामने जब आप बाल बना रहे हो या आप कुछ भी ब्रश कर रहे हो या कुछ सोच भी रहे हो, कोई आसपास नहीं है तो इंग्लिश में बोलते रहो. इंग्लिश में बोलते रहो. सही गलत का नतीजा वो बात की बात है, बट जो भी हो आप फ्रीली बोलते रहो. सी वन मोर थिंग, जब तक आप लोग नहीं बोलोगे, गलत सही बात की बात है, लेकिन जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. So first step is to speak, is to be confident, and to be confident starts practicing in front of the mirror. आईने के सामने खड़े हो जाओ, कुछ भी बड़बड़ाओ, लेकिन इंग्लिश में बड़बड़ाओ. आपको मन करेगा शायद आपकी मैं अपने मदर टंग में शुरू की हूँ, इंग्लिश बहुत बोर हो रहा है यार, कितना कब से मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट दैट इज नॉट द थिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितना बोलोगे उतना आप सुधारोगे, उतनी गलतियां करोगे उतनी गलतियों से आप सुधरोगे. So always try to understand this. Speak English. The more you speak, all this fumble, jumble, जो भी puzzle, confuse, सब निकल जाएगा दिमाग से. Yes. So I would request you all to frame this rule implies the same for noun plurals too. Which rule are you talking of, Ms. Ganguly? The one you're talking of teachers, etc.? See, plurals, when you're talking of plural, the plural, how to expand our vocabulary. Okay. I'll come to you, Shreya. Okay. Ms. Ganguly, when I'm talking of plurals, plurals are something which will come in the category of we, you, and they. So if the plurals are there, so automatically, if you're using plurals, so that is a category wherein you have to use only no s behind the verb. You cannot add s behind the verb when you're using plurals. Okay, Shreya, to expand your vocabulary,
The best way is to read books. First of all, read books means जो books बच्चों के लिए लिखा गया है. Small books written by Enid Blyton, Roald Dahl, जो लेखक हैं, जो authors हैं, जो बच्चों के लिए book लिखते हैं, वो book पढ़ो आप. पढ़ने के बाद अगर आपको कोई वर्ड्स मिले जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है या नहीं आ रहा है, उसको अंडरलाइन करो. And then you go to English Oxford Dictionary, take that, go through it, and you'll come to know the meaning. ऑक्सफोर्ड, इसलिए मैं बोल रही हूँ डिक्शनरी, गूगल बाबा जी का हेल्प मत लेना, क्योंकि अगर आपने गूगल बाबा जी का हेल्प लिया तो आपको सिर्फ उस वर्ड का ही मतलब पता चलेगा. बाकी आपको वो डिक्शनरी में जो आपको वर्ड दिखेगा, यू विल गेट ऑल द फॉर्म्स, द एडजेक्टिव फॉर्म्स, द नाउन फॉर्म, द प्लूरल फॉर्म, द वर्ब फॉर्म, एक्सेट्रा. सो द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी इज टू यूज डिक्शनरीज. Any questions? Any other questions? Can you all frame sentences with these words which I framed with teach, push, brush, go, double S, ending words, single S? Yes, waiting to read some sentences from your side. Okay, Kaustubh, reading, what kind of problems do you come through while you're reading? Is it the pronunciation part or the understanding part? What? Or the, the spelling part? He always pushes me, correct? Okay. She teaches well, correct? Perfect. Yes. So, Kaustubh, I need to know that. How to improve, what are the problems that you come across? Ram goes to the market every morning, correct? Pronunciation part. Okay. Now, see, for pronunciation, Kaustubh, I would advise you to go through some, wherein you have those phonic sounds, because हर एक alphabets का अलग-अलग pronunciation होता है. He teaches maths, correct. हर एक वर्ड के, हर एक शब्द के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है. उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आपको वर्ड प्रोनाउंस करने पड़ते हैं. सो बेस्ट वे, सी इट इज लाइक व्हेनेवर आपको लगता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कहीं पे आपको हिचक आ रही है या प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम wherever you get some advice about the phonic sounds, or also you can ask people who know English and the right pronunciation. So one more thing which I have to tell you, that this word always, these are called as a time period in English, or time period of simple present tense. Always, never, often, sometimes, usually, regularly. You have to remember, in English, ज़्यादातर time period हम हमेशा अंत में लगाते हैं, end में लगाते हैं. For example, I go to school every day. जबकि मैं हिंदी में बोलती हूँ आज मैं रोज स्कूल जाती हूँ, तो रोज जो आता है हिंदी में वो पहले आता है. बट इन इंग्लिश इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. बट देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो मुझे बताता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइम पीरियड, जैसे मैंने फिर से बताया, आपको बता रही हूँ, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, रेगुलरली, यूजुअली, एक्सेट्रा. ये वर्ड्स हमेशा 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 सब्जेक्ट के बाद ही आते हैं. He always brushes his teeth twice a day. I go to office every day, correct. She never meets me. Okay. I often go for movies. So इस प्रकार के जो words है, always, never, sometimes, usually, वो हमेशा subject के बाद ही आते हैं. Just remember this. उसको बीच में या sentence के अंत में मत लगाना. Okay. Yes, any more questions? She loves coffee, okay. I go to office every day, correct? Yes, anything else? Okay, any questions before I go ahead? Any more questions? Kaustubh, Shreya? Subject means the person who does it, karta. जो कर्म करता है, कर्म in the sense object or the predicate. जो काम जो इंसान करता है, those people or that person is called as a subject. कर्ता, जो काम करता है, that person is called as a subject. Welcome, Ashwini. Okay, Neelam, you had one, and I don't see Neelam asking the question.
Okay. Anything else before I go ahead? Great. Okay. Coming to the other part of again framing sentences in simple present tense using verb. Okay. कोई बहुत से वर्ब होते हैं जो वाई से एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पे, PAY, बाय, BUY, क्राई, CRY, क्राई, स्टडी, STUDY, स्टडी, ट्राई, TRY, ट्राई. ये सब वर्ब्स है. लेकिन आपने शायद नोटिस किया होगा, अनजाने में नोटिस कर लिया होगा या आपने जानबूझ के नोटिस किया हो या आपके आंखों के सामने आ गया. जब हम सेंटेंस बनाते हैं पे, बाय, से वगैरह से ही शीट के साथ, हम क्या बोलते हैं? शी pays her mobile bill, PAYS. Okay, but before I go, just let me share the screen with you. Just hold on. It will be easy for you all to understand. Okay, here are the examples. Okay, तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है कि जब मैं पे या बाई या से या कुछ से भी वाई एंडिंग वर्ब से मैं सेंटेंस बनाती हूँ यूजिंग ही शेड, पे और बाई या से के पीछे मैं सिर्फ एस लगाती हूँ और स्टडी, ट्राई, क्राई, फ्लाई के पीछे मैं IES लगाती हूँ. एनी आइडिया बिहाइंड इट? Why do I add only S behind the verb pay and buy and IES behind verbs like study and try जब मैं he she it के साथ सेंटेंस बनाती हूँ? Any idea? Please let me know. Yes. क्यों मैं लगाती हूँ y के पीछे S with verbs with PAY, pay, SAY, say, BUY, buy, but and I have vowels behind it. They don't have vowels behind it. They have vowels before Y. Correct, Shreya. And what are vowels? Vowels are the हिंदी में जिसको हम बोलते हैं स्वर, यानी कि AEIOU. Yes, English is a funny language. अमिताभ बच्चन ने बोला था ना, English is a funny language. So it is a funny language. कहीं पे भी कोई भी सवाल का हम अगर सवाल पूछे तो समझ में नहीं आता कि जवाब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है. Correct? Okay, Shreya. Yes, and what about IES, Shreya? If I have to ask you, like Shreya has replied that vowels are the swar in Hindi, which we call, and in English it is AEIOU. Now, yeah, okay. So now when it is like, for example, जब मैंने बताया vowels AEIOU, लोगों को क्या लगता है कि vowels मतलब कहीं पे भी अल्फाबेट जो AEIOU वाले अल्फाबेट्स हैं, अगर मुझे वो दिख गए तो मुझे वो हटा मतलब S लगा देना पड़ता है. या फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं कहीं आप लोग ने सुना भी होगा कि vowels के पहले जब मैं किसी वर्ड को प्रोनाउंस करूंगी तो मुझे एन लगाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एग फॉर माई ब्रेकफास्ट, तो हमें लगता है इट इज एन एरोप्लेन, ए से है, तो हमें लगता है कि चलो ए है, ई है तो एन लगा दो. नो, उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है. बट बिफोर आई गो हेड विद दैट, लेट मी टेल यू. तो यहाँ पे जैसे पे और बाई के पीछे हमारे सामने वाई के पहले AEIO में से ए है और यू है, इसीलिए मैंने वाई के पीछे एस लगाया है. बट इन केस ऑफ वर्ड्स लाइक ट्राई, क्राई, फ्लाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स है. कॉन्सोनेंट्स मतलब AEIOU वावल्स छोड़ के जो बाकी 21 अल्फाबेट्स है इंग्लिश में, उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट? तो Y के पहले अगर AEIOU 5 प्रकार के वावल्स नहीं है, तभी हम Y को हटा के IES में कन्वर्ट करते हैं. इफ आई हैव टू फ्रेम सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, if I have to frame simple present tense में sentence using Y ending verbs. A नहीं है तो yes. IES, AEIOU नहीं है तो IES, otherwise it will be S. Yes, questions and queries, please. Before you all go, ask questions, let me clear you this. Whenever I'm talking of the vowels AEIOU, mind that vowels मतलब AEIOU वाले alphabets नहीं हैं. AEIOU जब मैं बोलती हूँ, it is the pronunciation, the phonic sound that comes out of my mouth whenever I'm pronouncing some word. For example, it is an aeroplane, aeroplane, but it is a university. भले वो U से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं प्रोनाउंस करूंगी अ यूनिवर्सिटी. क्यों? क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी बोल रही हूँ, जो प्रोनाउंसिएशन साउंड आ रहा है वो आ रहा है U, Y से आ रहा है.
So that's the reason he is an European बोलते हैं लोग, but no, it is he is a European. क्यों? क्योंकि भले वो ई से स्पेलिंग स्टार्ट होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यू से आ रहा है, वाई यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. सो माइंड दैट जब मैं बात कर यू आर नॉट द अल्फाबेट्स बट द फोनिक साउंड्स, दोज आर कॉल्ड एज वावल्स. इसलिए हिंदी में उसे बोला जाता है स्वर. यस, an MBA, an MBBS. क्यों? an honest person, an owl. क्यों? भले वो स्पेलिंग तो एच से है. क्यों? MBA, MNC, ये सब वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एम से कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन हमें म से आता है, मम्मी, मैप, मग, एक्सेट्रा. लेकिन जब हम यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं MBA, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? MBA, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. MNC, MNC, एम का नहीं, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. MLA, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. ऑनर, ऑ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. दैट्स द रीजन हम इनके पहले एन लगाते हैं. एंड माइंड दैट विच इज अ वेरी कॉमन थिंग, जो मैं विच का आई कम अक्रॉस, जो ज्यादातर मुझे सुनने को मिलता है, वो होता है आई वर्क इन एन MNC कंपनी. Okay, so this is a very common thing which I get to hear. So please request you, do not put company फिर से, क्योंकि MNC itself includes multinational company. उसके बाद अगर आप लिखोगे मैं multinational company में काम करता हूँ, it sounds funny. Yes, Shreya, an elephant. No, Kausu, why an CA? CA में कहाँ कोई pronunciation है? It is a CA. CA के C से pronunciation आ रहा है ना? So it will be a CA. Shreya, an elephant is correct. Yes. So can you frame some sentences wherein you are using that y ending verb funda, which I have told you all, to frame sentences in simple present tense using he, she, it? Because I, we, you, they के साथ the same word रहेगा. I pay my bill, she pays her bill, they pay their bill. So can you please frame sentences? Let me know how many of you have understood. Kaustubh, is it clear? It's not an CA, it's a CA. Man, can you please suggest some good books to read for someone who writes? See, now it depends on the genre of book you want to write or you want to read, Neelam. It depends on the interest level of yours. Some people are interested in reading thrillers, so they will buy books written by authors who write thrillers. Some are interested in, hilarious books. Which question do you want me to repeat? Yeah, I want you all to frame some sentences using verbs which ends with Y, with he, she, it, or any other subject. He tried his best. Kaustubh, tried is a past tense. So in present tense, it will be he tries his best. TRIES. So in this case, you have framed it in he carries the cross, correct? Because of pronunciation. Yes, because of the pronunciation. Yes, what else? Samu, Kaustubh, can you frame he studies for 1 hour every day, correct? Yes. Kaustubh, can you frame a sentence? He pays well. Shreya, what do you mean by this sentence? He pays well. Do you mean to say, grammatically the sentence is correct. He pays well. She tries to study. Yes, correct. So what do you understand, or what do you want me to understand? He pays well. He tries to wake up early every day. Perfect. Kaustubh, this is a correct sentence, Kaustubh. Yeah, Shreya, what do you want me to understand from this sentence? He pays well, as in salary. Okay. Now, one more thing आपको याद रखना है कि जब भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो, आधा अधूरा सेंटेंस मत रखना. आधा अधूरा सेंटेंस रखोगे तो दुर्घटना घटेगा. क्यों घटेगा? क्योंकि मैं कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो और एक्शन कुछ और हो रहा है. Correct? So you have to understand, that's the reason, Shreya. So you have to say he pays us the salary quite well. So herein कोई दूसरा सवाल उठने का सवाल ही नहीं उठता है. इफ एक तीर से अगर आपने 2 शिकार कर दिया तो दूसरी बार फिर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. Okay? Shreya, am I clear? Yes.
Any questions and any doubts? Yes. Okay. Now, for example, I'm telling, is there any word as bringing? Yes, it is there. It is there. It's bring. मिला रहा हूँ, मिला रही हूँ. मैं market से mangoes ला रहा हूँ. So I'm bringing mangoes from the market. EP is visible, correct? Yes. Okay. Right now, if I tell you all sentences in Hindi, will you translate it in English and show it to me here? Okay, so I give you some sentences. For example, वो गीता है, वो मेरी मैथ्स टीचर है. वो गीता है, वह मेरी मैथ्स टीचर है, वो मुझे मैथ्स सिखाती है. Okay, I repeat again. वो गीता है, वह मेरी मैथ्स टीचर है, वो मुझे मैथ्स सिखाती है. So these are all in simple present tense. The entire sentence is in simple present tense. So now please write it up. I am bringing pizzas from Domino's. कौस्तुभ, ये करेक्ट है. आई एम ब्रिंगिंग पिज्जाज फ्रॉम डोमिनोज, बट ये प्रेजेंट टेंस नहीं है कौस्तुभ. दिस इज नॉट प्रेजेंट टेंस, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विच इज कॉल्ड एज अपूर्ण वर्तमान काल. मतलब आप जब बोल रहे हो आई एम ब्रिंगिंग पिज्जाज फ्रॉम डोमिनोज, मतलब उस वक्त आप जो कार्य कर रहे हो आप वो मेंशन कर रहे हो. आई एम ब्रिंगिंग पिज्जाज फ्रॉम डोमिनोज. लेकिन अगर आप रोजाना या कभी कभार या कभी भी आपको अगर पिज्जा लाना है, अगर आप डोमिनोज से लाते हो, द आंसर वुड बी आई ब्रिंग पिज्जाज फ्रॉम डोमिनोज. Okay. She's Geeta. She teaches us maths well. The thing is, वह गीता है. She is Geeta. वो हमें मैथ सिखाती है. Okay, she teaches us maths. Okay, don't have to write well, Shreya. Ma'am is a whole thing, one sentence. No, it's with full stop. वह गीता है, full stop. वह हमें मैथ सिखाती है. So you have written it correct, but don't put the word well at the end. She is Geeta, my maths teacher who teaches me maths. Neelam, the sentence that you have framed it means in Hindi, वह गीता है, वह गीता है मेरी मैथ्स टीचर जो मुझे मैथ्स सिखाती है. लेकिन मैंने कहा ये गीता है, वो हमें मैथ्स सिखाती है. So there's a difference. Okay. So you have to understand कि जिस प्रकार का, because हर एक सी नीलम आपने जो सेंटेंस बनाया वो उसमें गलती नहीं है कुछ, बट मैंने उस प्रकार का सेंटेंस नहीं बनाया जिस प्रकार से आपने ट्रांसलेट किया है. ओके ओके. इफ आई गिव यू ऑल द वर्ड पास, PASS, can you all frame? She's Neeta, she's my dance teacher, she teaches me dance. Perfect, Kasto. Okay, can you, I give you the word pass, 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 उसमें से सेंटेंस बनाओ आप. PASS, पास. मैं अभी सेंटेंस नहीं दे रही हूं, आप खुद बनाओ. PASS, पास. यस, सोचो क्या हो सकता है पास से. आप मुझे बताओगे पहले ये पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब क्या होता है? He passed the ball. Okay. Now again, कौस्तुभ पास लिखा है तो डबल एस एंडिंग वर्ड के साथ, ही शीट के साथ क्या आना चाहिए कौस्तुभ? It will be he passes the ball. He passes the ball जब वो वॉलीबॉल खेलता है. Complete the sentence. He passes the ball when he plays volleyball. That is specified. He passes the ball. Incomplete sentence लगता है कौस्तुभ, and you have missed out on ES. मैंने क्लियरली मेंशन किया था वर्ड्स एंडिंग विद CH, डबल S, सिंगल S, O, X के पीछे हम ES लगाते हैं व्हेन वी फ्रेम सेंटेंसेस विद मूव पास्ट. ओके. यू नो व्हाट, नॉर्मली हम जब बोलते हैं इंग्लिश में, द फर्स्ट थिंग वी टेल इज ही पास्ड हिज 12th स्टैंडर्ड. ही पास्ड आउट हिज 12th स्टैंडर्ड. करेक्ट कौस्तुभ, दिस इज अ करेक्ट वन. ओके, सो हम ज्यादातर बोलते हैं आई पास्ड आउट माई ग्रेजुएशन. इन इंग्लिश पास्ड आउट का मतलब जिस प्रकार से हम बोलते हैं वो पास्ड आउट नहीं है. पास्ड आउट मतलब बेहोश होना. तो अगर मैं बोलूं मैं बेहोश हो गई थी, ऐसा थोड़ी ना होता है. तो इट इज ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन और ही कंप्लीटेड हिज 12th. तो यहाँ पे सक्सेसफुल रिजल्ट इज इन एन एग्जाम इज पास.
That's what I was trying to tell you, Shreya. People who, we normally say is मैंने English में, मैंने English pass किया. It is not pass. I have crossed the passing mark or the crossing mark. But यहाँ पे जो passed out वाला जो word use करते हैं हम ज़्यादातर, उसका मतलब होता है बेहोश होना. Okay. Kaustav, this is the correct sentence. Yeah. So can anyone, like Kaustav has framed one sentence with pass. Can anyone else also frame the sentence with pass? Shreya, Neelam, whoever is online. Okay, the last 5 minutes remaining. I hope this session, what landmarks did you pass? No, Natasha, in this case, what landmarks did you pass would not be the right question. It is what landmarks did you come across? That would be the right. Pass is not the right word here. What come across means what are the things that you crossed by. You left something in the past and you're going ahead. This mark is 34%. Okay. Now see, for example, Shreya, in this sentence that you have framed, the past mark is 34%. Okay. Now, for example, एक word होता है English में permit. Correct. तो यहाँ पे अगर मैंने ये जो word permit है, वो भी एक verb है, permission से permit. तो अगर मुझे बोलना है कि please submit the permit document, तो ये वाला जो परमिट डॉक्यूमेंट जो मैं बोल रही हूँ, इट इज नॉट अ वर्ब. तो इसी तरह पास मार्क जो आपने बोला है, जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट. ओके, जो पास मार्क है, ये जो आपने लिखा हुआ है, पास मार्क इज नॉट अ वर्ब. यहाँ पे पास का मतलब यहाँ पे वर्ब नहीं हो रहा है. पास मतलब जो एक्शन कुछ करना है हमें, दैट इज द टाइम वी यूज द वर्ड पास. Okay, so this is what it is. Okay, I hope the session was helpful to all of you. Okay, again, I would like to say, if you like this session, please go to our description and our comment section, wherein you'll have the detail about our website, wherein you all get, you can log in and get the free courses available for spoken English as well as English grammar. And we also provide, and those courses are free of cost, and we also provide you books. So please be free to do that. And any comments, any questions, if you all have, you all can post it in the comment box, and I would be more than pleased to answer them. Before I wrap up or before I wind up, any questions, any doubts, and how was the session for all of you? Please let me know. Correct? Yes. Any more questions, any more doubts? How was the session for all of you? Please, I would be happy to know that. Yes, Kaustubh, Shreya, Natasha, Neelam, Ashwin. Yes. How was the session? Was it helpful? Any questions, any doubts before I wrap up? Yes. Any questions? Thank you, Shreya. Helpful session. Thank you, Natasha. No questions. Okay. I want you all to ask me questions in the comment section if you all have any questions, although. Okay. So with this, I would like to take your leave. Thank you for attending and hope to see you soon again. Thank you very much. Bye. Take care.